Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Arafat mujeeb from FEI Higher Secondary Institute. Today I am with 10th standard biology. Discussion is about the chapter control and coordination. Chapter number is second, and in this chapter today my topic to discuss is structure and function of neuron cell. Neuron cell का structure क्या है और what function it performs in a human or animal nervous system, कैसे काम परफॉर्म करता है. न्यूरॉन सेल जो है या नर्व सेल जो है, इट इज कंसिडर एज द लार्जेस्ट सेल in I mean the longest cell in a body, has it has to carry electrical impulse which generators in the cell have to convey this impulse from one end to another end. Let us first go to its structure. Here is, as per the structure is concerned, this is the neuron cell. I sketch out a diagram here on the board. Here you can say that this is the cell body here of the neuron cell. It's a cell body. This is considered as a tail. This is considered as the nerve endings. So in the cell body, you say the branched network of branches. These are known as dendrites. Dendrites. दो यहाँ पे ये दो, इन दोनों को हम कहेंगे dendrites single. It is known as the dendrite. डेंड्राइट जो है ये अराइज होते हैं सेल बॉडी से ही. दिस इज द सेल बॉडी, irregular in form, and this cell on the surface of the cell body there are the dendrites. These dendrites, they give us this to the surface, they give the branched network. In the cell body there is a prominent nucleus in the center, and there is a cyton, that is a soma. The fluid is found in the cell body, and there in the cell body there are the granules, circular in form, these below dots. These are known as the nucleus granules. And there are the fibrils. These are known as black color के मैंने बनाए यहाँ पे neurofibrils. Also in the cell body, or we can say it as sometimes known as the cyton of this cell body. In the cell body there is mitochondria, Golgi complex, endoplasmic reticulum, or the ribosomes, and the ribosomes contain the granules. They are known as the nucleus granules, and there are short fibers are found in the cell body, neurofibrils. And then this cell body is not confined here, it extends downwards here in the form of, and this part which is extending from the cell body is known as the axon. This is the axon of the neurocell, which is passing, which is traveling. That this long thread-like structure, white color in the middle, is known as the axon of the neuron. This is the extending part of the neurocell, and this neurocell is external. It is protected by a layer of cells that contain the fatty layer of cells. It gives the insulation. जिस तरह हमारा इलेक्ट्रिकल वायर होती है, कॉपर इलेक्ट्रिकल वायर, उस पर रैप किया गया होता है रबर, है ना. तो इसी तरह से ये जो है this sheet, this is known as the myelin sheet. Myelin sheet असल में प्रोटेक्ट करता है एक्सटर्नली एक्सॉन जो है, इसके बीचों बीच जाता है. there is a covering. There is not a continuous covering in the myelin sheet. There is the gaps. आप देखिए इन सेल्स के बीच में, इन सेल्स के बीच में जो हम इनको कहते हैं शान सेल्स, इनके बीच में वहाँ गैप्स है. इन गैप्स को कहते हैं हम नोड ऑफ रेनवियर. यहाँ नोड ऑफ रेनवियर में myelin sheet जो है कंटिन्यू नहीं है. देयर इज नो कंटिन्यूशन ऑफ द myelin sheet. एंड देन यू से दैट द एक्सॉन जो है एट द एंड, there are the number of axon
एंड्स, these are known as the axon terminals. This यहाँ पे जो नर्व सेल है खत्म होता है यहाँ पे. Then there is the endings, we know them the neuron axon endings, neuron endings या नर्व endings या axon terminals भी कहो. तो यहाँ ये जो axon terminals है या endings है, then they connect to the dendrite of another neuron के जो dendrite उसके साथ ये कनेक्ट होता है. जिस तरह हमारी एक इलेक्ट्रिकल वायर दूसरे इलेक्ट्रिकल वायर के साथ हम जोड़ देते, इसी तरह से यहाँ पे जो एक्सॉन टर्मिनल्स है फिर ये आगे दूसरे नर्व सेल के डेंड्राइट के साथ कनेक्ट होते हैं. दे फॉर्म द लॉन्ग चेन ऑफ द नर्व सेल. दैट मीन एज द नर्व इम्पल्स हैज टू ट्रैवल inside our body to a large distance. तो यहाँ myelin sheath जो है it gives the external protection. It is made of the fat layer से बना होता है, fat layer से myelin इसको हम sometimes we can hear myelinated sheath, हाँ myelin sheath. and यहाँ देखिए Schwann cells है. तो जो शॉन सेल्स है एक्चुअली प्रोटेक्ट करता है एक्सॉन को, लेयर एक बनाती है. देन देयर इज अ न्यूक्लियस इन द सेल्स. यहाँ देखिए इनको कहते हैं शॉन न्यूक्लियस, शॉन ऑफ न्यूक्लियस, शॉन न्यूक्लियस सिंपली. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल अबाउट द नर्व सेल. जो न्यूरॉन सेल या नर्व सेल को हो, इट इज ऑफ 3 टाइप्स. वन इज द सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन जो मैसेज करता है कैरी फ्रॉम द रिसेप्टर टू द ब्रेन. एंड देन देयर इज अ मोटर न्यूरॉन जो ब्रेन से ग्लैंड्स या मसल्स तक मैसेज लाती है. देन देयर इज अ रिले न्यूरॉन जो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में ही रहते है. रिले न्यूरॉन कम्स बिटवीन द सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन के बीचों बीच इसको कंबाइन करता है. दैट मीन जो रिले न्यूरॉन जो है दिस इज द इंटरमीडिएट न्यूरॉन. इट कम्स बिटवीन द सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन एज वी सी द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. विदिन द स्पाइनल कॉर्ड देयर इज द रिले न्यूरॉन और inside the brain there are the number of the relay neuron. So neurons are of 3 kinds: sensory neuron, motor neuron, neural neuron. It is a general structure of the nerve cell. जो न्यूरॉन सेल का जनरल स्ट्रक्चर कैसे रहता है, तो इट इज द लॉन्गेस्ट सेल एज यू कैन सी द एक्सॉन टर्मिनल्स. एक्सॉन टर्मिनल जो डेंड्राइट्स जो यहाँ आते हैं. बाकी अगर हम प्रोसीड कर लेंगे यहाँ पे जो डेंड्राइट होती हैं, हाँ अनदर न्यूरॉन सेल बॉडी के जो डेंड्राइट होती है तो उसके साथ फिर वो जुड़ा हुआ होता है. ये देखिए यहाँ पे दूसरे नर्व सेल आ गई, इसका उसका एक्सॉन देखो, एक्सॉन पार्ट आया. यहाँ देखिए एक्सॉन पार्ट. तो डेंड्राइट के यहाँ पे एक गैप आता है दैट इज नोन एज साइनेप्टिक गैप. साइनेप्टिक गैप. यहाँ साइनेप्टिक गैप में जो गैप जो है आपका मतलब कहना के गर्ज होगा कि यहाँ मैसेज नहीं होगी, फिर इलेक्ट्रिक इम्पल्स पास नहीं होगी. पास होती है. There is a somewhat of mechanism of, we can say there is a secretion of the neurotransmitter chemical secrete होती है, उसकी secretion होती है in the synaptic gap. Synapse is a gap. Synapse is a gap between the 2 neuron cells. This gap comes between the axon terminal and the dendrite of another neuron cell. के बीच में जो गैप आता है that is known as the synaptic gap भी कहते हैं. तो वहां से जो एक केमिकल सब्सटेंस सिक्रीशन निकलता है एक्सॉन टर्मिनल से, आगे हायर क्लास में सीखोगे, दैट इज द न्यूरॉन ट्रांसमीटर केमिकल सिक्रीशन. हाँ तो उसके कदर से जो यहाँ इलेक्ट्रिक इम्पल्स है वो उसको हेल्प करता है पास करने में
दूसरे न्यूरॉन सेल में। अब जो न्यूरॉन सेल है इसका क्या काम रहता है नर्वस सिस्टम में? इट इज वर्क इज टू कैरी इलेक्ट्रिक इम्पल्स विच जनरेटर्स इन द रिसेप्टर सेल्स। हाँ, वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स या ब्रेन से जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होता है उसको ट्रैवल करना है टू द ऑर्गन, टू द ग्लैंड, टू द मसल सेल्स, जहाँ उसको रेस्पॉन्ड देना है, रेस्पॉन्स देना है। तो यहाँ जो नर्व सेल का यही एक काम होता है, प्राइमरी जॉब, दैट it has to carry electrical impulse from one end to another end. This electrical impulse passes through the dendrite to the cell body, then axon. With the axon, they goes to they passes to the axon terminals. Then here it can be passed to the another neuron, neurocell. And there is a gap. There is no continuity. There is a gap. There is a junction. Here the gap. It is known as synapse. Synaptic gap. There is a secretion of the chemical neurotransmitter. Is a chemical which is secretion by the axon terminals of the one neuron cell. This helps in passing the electric impulse to the another neurocell. क्या काम रहता है neurocell का? To carry electrical impulse, electrical signal, from one neurocell to another neurocell. As this electric impulse carries a message, what receptor cells have received in the surroundings and what response is given to that stimulus. हाँ, here यहाँ पे इसका तरह हम वापस रिएक्शन प्रोवाइड करते हैं आफ्टर इट ट्रैवल टू द ब्रेन where there is a processing. After processing, again there is a regeneration of electrical impulse in a neurocell. Then this electrical impulse travel to the adjoining muscle cells, glands, where those glands muscle cells are now giving the response. फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने सिचुएशन के तौर पे रिसेप्टर सेल्स ने सिग्नल रिसीव किया है वो उसने जनरेट किया है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स किस में जनरेट हो गया है? सेंसरी न्यूरो में, sensory neuron में. Then sensory neuron carry this message to the spinal cord. Then through the spinal cord it goes to the brain. From the brain where there is a processing of this electrical impulse, electrical signal. Then it is mechanized here. Then with the help of the motor neuron it is generated again into the electrical impulse. Then it reaches to the glands muscles where now those glands muscles show the response to that kind of situation. That means to get that kind of stimulus that already has received by the receptors. receptor cells जो हमारे स्किन में होते हैं, रिसेप्टर सेल जो हमारे आईज में होते हैं, रिसेप्टर सेल जो हमारे नोज में होते हैं, रिसेप्टर सेल जो हमारे ईयर में, जो सेंस ऑर्गन्स हमारे होते हैं, बेसिक सेंस ऑर्गन्स, जिनसे रिसेप्टर सेल्स अलग अलग किस्म के रिसेप्टर सेल्स वाबस्ता होते हैं, वो अलग अलग सिचुएशंस रिसीव करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, फिर वो जनरेट करते हैं इस सिचुएशन को एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स के सूरत में, वही लिया जाता है, वही काम है सेंसरी न्यूरॉन का, टू कैरी टू द ब्रेन वायर देयर इज अ processing, there is a thinking, then after thinking there is again regenerating of the electrical impulse. Now in this way, this time it is sent through the motor neuron then sends this message to the respective gland, to the respective मसल जहाँ रिसेप्टर सेल्स नज़दीकी पड़ता है तो वहाँ पे इसको रेस्पॉन्स मिलता है वापस कि आप कैसे रेस्पॉन्ड कर लोगे, ये वापस मोटर नर्व से भेजा जाता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स। चाहे सेंसरी न्यूरॉन हो, मोटर न्यूरॉन हो, रिले न्यूरॉन है, इट हैज़ टू परफॉर्म वर्क inside the nervous system to carry electrical impulse which has been generated by the receptor cells, which has then again regenerated by the brain, and then the motor nerve is going on to carry it to the muscles, where there is a response, and it is the work of all kind of nerve cells to carry electrical impulse from one end to another end where has to give the response. I hope you understand about the structure and function of neurocell. It is an important question as per
as per the examination is concerned. Thank you.